So power is equals to current into voltage. Power is equals to current squared into resistance. Power is equals to voltage squared over R. Okay. So these are the formulas that we have already discussed. Assalamu alaikum. जी सर आपकी रिसिप्ट आ गई थैंक यू सो मच इंशाल्लाह 6:15 पे क्लास होगी तो join accordingly I'll just send the link so power is equal to current into voltage current squared and voltage squared over resistance. Now the first question is from November 2003. It says small heater operates at a power at a 12 volts and 2 amperes. So this is the voltage, this is the current. How much energy will it use when it runs for 5 minutes? 5 minutes means 5 into 60 to make it in seconds. So 300 seconds हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है? What you need? Power find करना है. So power is equals to current into voltage. Power is equals to current into voltage. That's 12 into 2. That makes it 24. अब एनर्जी निकालनी है. एनर्जी क्या होती है बेटे? एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम या सिंपली आप दोनों तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकती थी. सो इट्स 24 into 300. क्या आंसर होगा बेटा? जल्दी से बताओ. 7,200. Are we all getting this same answer? Yes, sir. Calculators, please. सामने रखना. All right. उसके बाद which quantity is measured in kilowatt hours? So I told you that electrical energy, when used to find the cost, it's measured in kilowatt hours. It's measured in kilowatt hours. So what quantity is measured in kilowatt hours? कौन सी quantity measure करते हैं kilowatt hours में? Energy. Energy. Lamp is rated 12 volts, 600 milliwatts. What is the current in the lamp? 12 volts is the power, and 600 millivolts is the, sorry, my bad. It's the voltage. 600 millivolts is the power. You need to find the current. So you just need to rearrange the first formula. This formula को rearrange करो. It would be power is equals, sorry, current is equals to power upon voltage. Current is equals to power upon voltage. That's 600 divided by 12. That makes it 50 milliamps. Milliamps, yeah. Is it? Yeah, it's 50. All right. Yes. So you might have asked me this question कि सर ये मिली को डायरेक्टली वॉट्स में कन्वर्ट नहीं करते. तो बेटा बिल्कुल करते हैं, लेकिन इस वक्त आपको जो ऑप्शंस में आंसर अवेलेबल है वो मिली एम्पेयर्स में, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. Lamp is rated 60 watts and 240 volts. What is the current in the lamp when used normally? So power is given, voltage is given. Again, same with typical formula, power upon voltage. That is 240 up, oh sorry, 60 upon 240. That makes it 1 upon 4, I guess. That's 0.25. Yes. Yes. Yeah. All right, there is a current of 0.25 amperes in a lamp connected to a 240 volt supply. What is the input power to the lamp? So current is given, voltage is given. Input power चाहिए, power is current into voltage. So current is 0.25, voltage is 240. Calculate please. I think it should be 60. Check करो. 60. Yes, 60. Yeah, it is 60. Yeah. Which unit measures energy input to electrical appliance? B. B. Yeah.
kilowatt hours. Energy is represented by E, current I, power P, charge Q, PT by V, and time by T. Which pair of equations is correct? So energy आपको बताया था power into time. Power आपको बताया था क्या? ऊपर तीनों फॉर्मूलाज लिखें. तो इसके पैरेलल में एनर्जी की इक्वेशन क्या थी? एक आई वी टी. दूसरी एनर्जी की इक्वेशन क्या थी? आई स्क्वायर आर टी. तीसरी एनर्जी की इक्वेशन थी वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी. राइट? Yes. So energy is represented by E. Which pair of substances is correct? So energy क्या है? Power into time. So energy current into time तो नहीं हो सकता. ठीक है. फिर energy is VQ upon T. VQ क्या था? It was work done ना? याद है? Yeah. Do you remember voltage क्या था? Work done upon charge ना? Work done upon charge. Yes or no? So work done Yes. is VQ. Do you remember this? याद है? Yes. तो VQ upon T means work done upon time. Yes, ये एनर्जी हो सकती है. वर्क डन अपॉन सॉरी, ये तो पावर होता है, तो एनर्जी नहीं होती ना. पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम. सो इट कैन नॉट बी एन ऑप्शन. ओके. एनर्जी इज IVT. हाँ, ये हो सकता है. पावर इज IV. हाँ, ये भी हो सकता है. ये भी ठीक है. एनर्जी इज VQ. जी हाँ, VQ तो होती है एनर्जी. बट इज पावर IV अपॉन T? नहीं, पावर तो IV इंटू T होता है. ये सही. ये सही. ठीक है. पावर इज IVT नहीं. सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? C. सी. C. An electric iron is marked 240 volts, 2500 watts. Four fuses are available with values of 5 amperes, 3 amperes. Which fuse should be used? So fuse हमेशा हम ऐसे यूज करते हैं जिसकी वैल्यू एक्चुअल वर्किंग करंट से थोड़ी सी ज्यादा हो. सो हमें इसका मतलब है इस अप्लायंस का पहले करंट फाइंड करना होगा. करंट क्या होता है बेटा? पावर अपॉन वोल्टेज. पावर कितनी गिवन है? 2500. वोल्टेज कितनी गिवन है? 240. सो 2500 अपॉन 240. जरा बताना आंसर क्या आ रहा है? 10.41. 10.41. तो 5 एम्पेयर्स का तो I'm यूज नहीं also कर getting सकते. कैन नॉट बी 10.41. लेसर. 10 का भी यूज नहीं कर सकते. सो द ओनली ऑप्शन इज 13 एम्पेयर्स. राइट? Okay. Wait, why can't? Why can't Oh, Say it okay, got again. it. Got it? Yeah, okay. Any problem? Got Any it. confusion? we No. use 10? Why can't I use 10? अच्छा, देखो अगर 10 एम्पेयर की मैं बात करूँ, 10.14 एम्पेयर, आई थिंक ये आप लोगों ने वैल्यू निकाली थी. That's the current. Yeah. So Yeah. this value of current is required for the appliance to work. फ्यूज क्या करता है? फ्यूज की जो रेटिंग होती है वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि इससे ज्यादा करंट कभी भी नहीं जाने देना. इट ब्लॉक्स द करंट बाय मेल्टिंग इटसेल्फ. फ्यूज मेल्ट हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता अगर फ्यूज की वैल्यू से ज्यादा का करंट होगा. ठीक. Okay. तो Okay. 10.14 वर्किंग करंट था. अगर आप 10 का ही फ्यूज लगाएंगी तो 10 पे वर्किंग स्टार्ट होने से पहले ही अपना फ्यूज जल जाएगा, तो अप्लायंस कभी काम नहीं करेगा. तो इसलिए वर्किंग करंट से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए फ्यूज की. And like, what if it were 30 amperes? Yeah, 13 is the next closest No, one. 30. Oh, why not 30. 30? Okay. So देखो, let's say एक appliance work कर रहा है सिर्फ 30 amperes में ना, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके करीब करीब वोल्ट करंट पे उसको ब्लॉक कर दूं. If I apply a 30 ampere fuse, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आपके पास सर्किट में करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, let's say 10 चाहिए, 15 amperes करंट हो गया, 20 amperes हो गया, आगे आपका डिवाइस जल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा. लेकिन फ्यूज कहेगा अभी तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आई, अभी करंट को जाने दो, अभी भी जाने दो. होता क्या है? वी हैव टू स्टॉप द करंट व्हेन इट गोज अबव द वर्किंग वैल्यू, अबव अ सर्टेन वैल्यू. हमें करंट को क्या करना होता है? स्टॉप करना होता है. क्या करना होता है?
स्टॉप करना होता है, राइट? फ्यूज का काम ही यही होता है। अब फ्यूज पे अगर बहुत ज्यादा वैल्यू फ्यूज लगाओगे ना, तो इसका मतलब है इट विल अलाउ डेंजरस करंट टू फ्लो इन द सर्किट, एंड सर्किट को स्विच ऑफ ही नहीं करेगा। फ्यूज का तो काम ही यही होता है कि वो सर्किट को फौरन स्विच ऑफ कर ले जैसी करंट आपके पास नॉर्मल वर्किंग करंट से बढ़ जाए। ठीक, Okay. Yeah. ऑलराइट। उसके बाद ये हो गया, थोड़ा सा कॉस्ट के क्वेश्चंस करते हैं। कॉस्ट की क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, so the first question is cost of electricity 60 cent per kilowatt hour. What is the cost of running 3 kilowatt heaters for 4 hours? So 60 cents per kilowatt, 3 किलोवाट हीटर को 4 आवर्स के लिए चलाना है। तो हमने कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था? आपको बताया था कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, जो एक यूनिट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम किलो वॉट आवर्स में लेते हैं। तो हम देखेंगे 1 किलो वॉट आवर की कॉस्ट कितनी है, तो उसने बताया 16 सेंट्स। टोटल कितने किलो वॉट आवर्स हैं, मतलब टोटल एनर्जी, टोटल किलो वॉट आवर्स या टोटल यूनिट से मैं बोलता हूँ ना, मैंने इलेक्ट्रिसिटी के 500 यूनिट यूज किए, तो उसका मैं 500 यूनिट एनर्जी यूज की, राइट? And what is 1 unit of energy when we are costing? So 1 unit of energy is 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour. ठीक है, तो इसने कितने किलोवाट्स का क्या है इलेक्ट्रिसिटी हीटर है, ठीक है। इसने 3 किलोवाट आवर का हीट, 3 किलोवाट का हीटर लिया और उसको 4 आवर्स तक चलाया। तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3 into 4, राइट? 3 into 4। गेटिंग माई पॉइंट? Yeah. Then won't we What's like the cost? What's the right option? C. C. All right. उसके बाद there's this heater. Diagram shows hair dryer. A fan has a power rating of 0.1 and heaters each have a rating of 0.4 kilowatts. Wait, so like we won't divide it with the other No, you stuff? do not need to convert it into seconds. I think that's what you are asking for. What, No, huh? like what is there like a formula for like finding out the cost or This is it. This formula. okay. All right. All right, got it. And So also, why did we not convert it? into seconds, right? Yeah. that was my Okay. question as well. Okay, so actually what happens, calculating electricity cost in kilowatt hours is important because, you know, जब मैं बात करता हूँ 1 जूल, 1 किलोवाट आवर की ना, 1 unit of electricity, 1 unit का मतलब क्या होता है बेटे? इसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर्स, 1 किलोवाट आवर्स। एंड हम आराम से महीने के 1000-2000 यूनिट यूज कर लेते हैं ना। Yeah. तो अगर हम 1000 यूनिट यूज कर रहे हैं, दैट मींस 1000 किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी आर यूजिंग। यस। Yes. एंड अगर मैं 1 किलोवाट आवर की बात करूं, इट्स एनर्जी ना, तो जूल्स में मेजर होगी। इट्स 1 किलो का मतलब क्या हो गया? 1000। और आवर का मतलब क्या हो गया? 3600 सेकेंड्स। So that means I'm using 3600,000 joules of energy. It's a very large unit. It's a very large unit. अब मैं क्या करूंगा? 3600,000 joules is 1 unit और मैंने 1000 यूज किए हैं, तो मैं 3 जीरो और ऐड कर दूंगा। That means this will make the number very large to write. This will result in high chances of error to be made during the billing. है ना? हो सकता है ऐसा? Yes. अब जब मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि मेरे पास एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, बिलिंग का प्रॉब्लम आएगा, तो उसमें मैं यूनिट कुछ चेंज कर देता हूँ ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए, मेरे लिए लिखना आसान हो जाए, यूजर के लिए पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है? Oh, okay, got it. So we only do not convert when we are using, when we are finding out the cost. Otherwise हर जगह हम पावर को वॉट्स में कन्वर्ट करते हैं और टाइम को आवर्स से सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है?
Okay, got it. All right, now this is a hair dryer. The fan has a power rating of 0.1 kilowatts. And the heaters each have a rating of zero point 0.4 kilowatts. The cost of the electricity is 8 cents per kilowatt hour. What is the cost of running the dryer for 2 hours with switches P, Q closed and switch R open? तो स्विच आर को ओपन रखा हुआ है, स्विच आर को ओपन रखा है, तो इसका मतलब है इस सर्किट को अगर मैं रीमेक करूं, दिस इज द फैन, ठीक है, दिस इज द हीटर, और ये आपके पास स्विच पी है, ये आपके पास पावर सप्लाई है, एंड दिस इज हाउ हीटर इज कनेक्टेड. नीचे वाला हीटर कनेक्टेड नहीं है, राइट? यस और नो? Yes. तो आपका ये Yeah. फैन यहाँ पर कनेक्टेड है. दैट्स हाउ इट वुड लुक लाइक. Yes or no? Yes. Only Yeah. this Yeah. heater is connected. This switch and power supply is there, and this fan's there, right? So Yes. Yes. अब ये क्या होगा? अब ये आपके पास हो जाएगा फैन हीटर, फैन और हीटर, ठीक है. नाउ दे आर आस्किंग मी व्हाट्स द कॉस्ट. सो कॉस्ट अगर मैं निकालना चाहूँ, अब मैं सबसे पहले निकालूंगा पावर. फैन की पावर गिवन है 0.1 किलोवाट, ठीक है, और हीटर की पावर गिवन है 0.4 किलोवाट. तो व्हाट्स द टोटल किलोवाट, किलोवाट्स टोटल पावर कितनी हो गई? पावर इज इक्वल्स टू 0.5 किलोवाट्स. ऐसा ही है? Yes. Yes. 0.1 and 0.4. Now, one kilowatt hour is costing how much? 8 cents. So for how much time am I using? For 2 hours. For 2 hours. So if I need to find the energy, energy would be equals to 0.5 into 2. 0.5 into 2. That's equals to 1.0 kilowatt hours. Yes or no? Yes. Yes. That means this is the total energy you are using, right? And the cost of one of the kilowatt hours is what? 8 cents. So what's the total cost? Tell me. 1 kilowatt hour is 8 cents. And how many kilowatt hours am I using? So it's D. Yes. 1 kilowatt है सानिया, 1 kilowatt hour एनर्जी यूज कर रहा हूँ, और उसके अलावा क्या है, 1 kilowatt hour की कॉस्ट 8 cents है. Yeah. So any problem, any confusion? No. No. Now, which cost the most if operated from the same main supply? सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी होगी? तो जाहिर है सबसे ज्यादा कॉस्ट उसकी होगी जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ऐसा ना? सो अब जरा कन्वर्ट करते हैं इसको एनर्जी. देखो, मिनट से आवर्स में जाने के लिए ये नोट कर लो अपने पास, डिवाइड बाय 60 करते हैं. गोइंग फ्रॉम मिनट टू आवर्स, you need to divide by 60, right? And watts to kilowatts, you need to divide by 1000. ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? It's 5 kilowatts, and this is 1/60 hours. So total energy कितनी होगी बेटा? 5/60, 5 into 1/60, right? 5 into 1/60. Yes or no? Yes. Yes. That's 1/12. ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? 1 kilowatt, and this is 10/60. So यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? 1 into 10/60, right? That makes it 1/6. Then this is Yeah. 0.5. Yes. No, nothing. And this is just 1 hour. So energy is equals to 0.5 into 1.
That's 0.5 kilowatt hours. This is 0.1 and this is 24. So energy is equals to 0.1 into 24. That's 2.4. And I guess this is the largest power, a largest Yes. energy. So Yeah. that's heat. Yes. Any problem, any confusion? No. 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 Which of the following would cost the least if operated from the same voltage supply? Which of the following would cost the least? So ये वही same question है but it's the least now. चलो अब हम इसको पूरा दोबारा नहीं करते हैं as it is. मुझे बताओ इसमें सबसे कम किसमें था? ये या ये या ये? The A one? A, शाबाश. Yeah, A. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा तुम अभी कहाँ हो? अच्छा अभी तो हाँ अभी तो मत आओ, अभी मेरी क्लास चल रही, मैं करता हूँ ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ी देर में. सही? हाँ हाँ करूंगा करूंगा, मैं टाइम बताता हूँ. ठीक है. Hafiz. All right, so next, an electric heater is rated 3 kilowatts. Electrical energy costs 20 cents per kilowatt hour. What is the cost of using the heater for 5 hours? So 3 kilowatts, 20 cents, and then 5 hours. Energy निकालनी, energy क्या होती है बेटे? Power into time. Power कितना है? 3. ठीक है. Time कितना है? 5. That's 15 kilowatt hours, right? And 1 kilowatt hours is 20 cents. So 15 into 20, cost आ जाएगी 300. Got it? Yes. All right. उसके बाद, a person uses a 3 kilowatt electric fire for 2 hours and a 2 kilowatt heater for 4 hours. What is the total cost if the price of the electrical energy is 5 cents per kilowatt hour? So 3 kilowatt को 2 hours के लिए use here, right? That's 3 into 2, 6 kilowatt hours हो गए. And then 2 into 4, that's 8 kilowatt hours. You have a total of 8 and 6, 14 kilowatt hours. Yes or no? Yeah. yeah. Okay, so what's the cost if the price of electrical energy is 5 cents per kilowatt? So 14 into 5, that's 70. Any problem, any confusion? No. All right. No. Then 1 kilowatt hour of energy costs 0.24. How much does it cost to run a 2 kilowatt heater for 3 hours? So 1 kilowatt hour की cost है. You have 2 kilowatt heater being run for 3 hours. So 2 into 3 is 6 kilowatt hours, right? And Yes. cost would be equals to 6 into 2.4, sorry, 0.24. I have a question. How did he get in the last one 14 kilowatts an hour? All right, so this is 8 kilowatt hours from the heater and 6 kilowatt hours from the electric fire. Oh, okay. Got it? Okay, got it. All right, next. What was the answer to this one? D. 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 All right. A 100-watt lamp is switched on for 5 hours each day for 3 weeks. The cost of 1 unit electricity is $0.24.
How much does it cost to run the lamp for this time? So 5 hours each day. 5 hours each day, not 24 hours. 5 hours each day for 3 weeks. So एक वीक में 7 days होते हैं. 3 weeks, 3 weeks का मतलब क्या है? 7 into 3. एंड हर वीक में 5 hours. हर वीक में 5 hours. 3 weeks का मतलब क्या है? 7 into 3. राइट. एंड हर डे कितने के बचे? 5 hours का. और पावर कितनी है? 0.1 kilowatt. So what would be the total kilowatt hours? It's 0.1 into 5 into 7 into 3. That will give you energy, right? And then power would be what? Energy into energy तो आ गई. Cost क्या होगी आपके पास? Cost would be equals to this energy with 0.1 into 5 into 7 into 3 into 0.24. Find it out. बताओ जल्दी से. C 2.52. कितना आ रहा है बेटे? Please calculate. 3 of you. It is the C one. I think it's right. Please, can someone confirm? Yes, I'm also getting the same answer. Same. Okay. So any problem? Any confusion? No. No. All right. And then the last two questions. So the diagram shows circuit, and for a dryer, once again, it's the same question which we did over here. ठीक है, थोड़ा सा उसकी वर्डिंग चेंज है. 2007 में आया था क्वेश्चन, एंड बस हीटर की थोड़ी सी उन्होंने डायग्राम चेंज की है. That same is repeated after 10 years in 2017. So it's का D आंसर वही again. डी होगा. ठीक है. Then power of electrical heater is 3 kilowatts switched on for 2 hours and 30 minutes. 2 hours 30 minutes का मतलब है आपके पास 2.5 hours हो गए. 2.5 hours. ठीक है. पावर है आपके पास 3 kilowatts. कॉस्ट है आपके पास ये. So total cost, right? Total cost given is बार. ये थोड़ा सा different question है बाकी questions के मुकाबले में. This is the total cost given to you. They are asking you the cost of electrical energy. So total cost क्या बताया था आपको मैंने? Cost per kilowatt hour into total kilowatt hours. Yes. Total cost आपको कितनी given है बेटे? 120 given है. ये आपने निकालना है. I'll call this X. And total kilowatt hours कितने आ गए? 2.5 into 3. 2.5 into 3. Yes, is it? Yeah. Yeah. X is representing the cost, right? Cost, yes, cost से related. Total cost 120 है. मैंने एक काम किया. My bad. ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है. मैंने इसको क्यों माइनस में कर दिया? 120 is equals to X 2.5 into 3. ठीक है. Got it? Yes. Yeah. All right. So we have done almost the questions on cost from 2007 till 2017. ठीक है. 18 in fact 18 19 तक ये क्वेश्चंस हमने सारे इस पे कर लिए. सिमिलरली पावर की इक्वेशंस 2003, पावर एनर्जी की इक्वेशन 2003 से लेकर 2012 के अराउंड इतने कर लिए. एंड हमने फिर अगली क्लास में कुछ जो है
और पास पेपर्स भी करने हैं एंड कुछ और टॉपिक को भी आगे लेकर चलना है। आगे हम जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी को सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट्स को इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, राइट? So it's 2 minutes to the class. In fact, less than that. We'll keep it till here and continue from the same point, inshallah. Okay.